Morning students. Today we are going to start with the next topic, that is reflection of waves. In class 9th and 10th you have studied about the reflection of light. For reflection of light you need a mirror because its wavelength is small. But for the sound waves or for the mechanical waves, like sound wave, the reflection takes place from a hard surface from a hard surface which is called as reflector, right? So this from this hard surface the reflection of wave takes place. Now what are the laws of reflection? If this is a solid surface, this is a solid board or this is a solid surface, and a wave is incident on it. This is an incident wave, this is a point of incidence, and here you can draw a normal. This is a normal, this is incident wave, this is normal. What is the angle which it make with the normal? That is angle of incidence, and it get reflected from here. What is the angle it make? This is angle R. This is reflected wave. This is reflected wave. And what are laws of reflection of sound wave? Reflection of wave. First, angle of incidence is equal to angle of reflection, right? ये आपके लाइट में भी सेम होते हैं. For this also it is same. Incident wave, sound wave, sorry, incident wave, reflected wave, reflected wave and normal all lie in same plane. Normal all lie in same plane, right? Now we have to discuss one more important point. Whenever the reflection, because the reflection of wave takes place from any of the hard surface or any whenever there is a change in medium, right? Now note very important point. The important point is this: whenever the reflection of wave takes place, reflection of, this is very important point, when the reflection of wave takes place from hard surface or from denser medium, then there is a change of phase of pi. Suppose अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दिस इज अ ऑर्गन पाइप ऑल ऑफ यू नो. तो यहाँ पर आपका कौन सा मीडियम है? डेंस. ये आपकी एक बाउंड्री है. व्हेन द वेव इज ट्रांसमिटेड अलोंग दिस डायरेक्शन एंड हेयर देयर इज अ कंप्रेशन, क्योंकि साउंड वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस हार्ड सरफेस, direction of the wave get reverse. If it is moving along positive direction, so this wave is traveling along negative direction, and this is compression. After compression क्या आना चाहिए था? rarefaction. But यहाँ पर क्या आएगा? compression, because there is a phase change of pi degree. तो अगर हम incident wave को show करें, if incident wave is phi equal to r sin omega t minus kx, तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी? द रिफ्लेक्टेड वेव इज, दिस इज इंसिडेंट वेव, तो रिफ्लेक्टेड वेव इज y dash is equal to r sin omega t plus kx. Why I have written plus kx? Because its direction get reverse, and plus angle pi. There is a phase change of pi. Is it clear? तो ये बन जाएगा sin pi plus theta, तो it is minus r sin omega t plus k into x, right? This is the reflection of wave takes place from a hard surface or from a denser medium, from a hard boundary or from a denser medium. Next is, if the reflection of wave takes place from, if the reflection of wave takes place
फ्रॉम ओपन बाउंड्री. ओपन बाउंड्री का मतलब क्या है? रेयरर मीडियम. ओपन बाउंड्री, इसको हम क्लोज्ड बाउंड्री भी कह सकते हैं. दिस इज फ्रॉम क्लोज्ड बाउंड्री, राइट. हियर रिजिड बाउंड्री यू कैन से. दिस इज द रिजिड बाउंड्री. क्लोज्ड है. दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव टेक्स प्लेस फ्रॉम रिजिड बाउंड्री, राइट. इफ इट इज फ्रॉम ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री में क्या होगा? यहाँ से वेव आई और सपोज यहाँ कंप्रेशन है, तो आफ्टर दिस रिफ्लेक्टेड वेव में क्या होगा? रेयर फैक्शन, क्योंकि कंप्रेशन के बाद क्या आएगा? रेयर फैक्शन. और तो अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव की क्या हो जाएगी? दिस इज आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स. देर इज नो चेंज इन फेस, only the direction get reversed. Only the direction get reversed, right? Now the important applications of reflection of sound wave या reflection of sound waves. फर्स्ट इज एको. एको कैसे फॉर्म होती है? एको आपने सुनी है, आप कहीं हिली एरियाज में चल जाइए, कोई रूम आपका खाली है तो वहाँ आप बोलते हैं तो साउंड रिफ्लेक्ट होके आती है. तो फिनोमिना ऑफ इको, इको इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव फ्रॉम द हार्ड सरफेस. जो आपका स्टेथोस्कोप है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है. स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप, इन स्टेथोस्कोप इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, राइट. ईयर ट्रम्पेट और हियरिंग एड डिवाइस में भी इसका यूज़ होता है. हियरिंग एड डिवाइसेस में आपके जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स जो होते हैं उनकी पर्टिकुलर एक शेप होती है लाउड स्पीकर्स में, ठीक है. टू सो दैट द साउंड मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. इस तरह से कॉनिकल शेप में होते हैं, तो यहाँ से अगर साउंड आ रही है तो ये इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे एंड मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. साउंड बोर्ड्स आपके यूज़ होते हैं ऑडिटोरियम में. साउंड बोर्ड्स, राइट. साउंड बोर्ड्स आपके टू मेक द साउंड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. नेक्स्ट आता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. क्या है ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स? फर्स्ट I will explain. Let us suppose the two waves are traveling through a medium, like in this way. This is the first wave having the displacement y1 and varying with the time t. Second wave is these two waves and their amplitude. This is y1, or second wave is having the amplitude as y2. This is y varying with time. These two waves get superimposed. What happens then? A new wave is formed, क्योंकि crest किस पे fall कर रही है? crest पे. और तो resultant wave is that wave whose amplitude is, जब ये superimpose हुई तो crest किस पे fall की? crest पे. trough किस पे fall किया? trough पे. तो resultant amplitude is y1 plus y2. trough का भी y1 plus y2, right? So what is superposition? Principle of superposition waves. When the two waves are traveling, two or more than two waves are traveling through a medium, then they get superimposed over each other, and the resultant wave is formed after the the resultant wave having the amplitude as the vector sum of the displacement due to individual wave. Y is equal to y1 plus y2. जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव. दोनों का क्या करोगे आप? ऐड, इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड. सपोज अब अगर एम्पलीट्यूड आपका क्या है? डिफरेंट. ओके, और इफ द क्रेस्ट फॉल ऑन द ट्रफ, if trough, suppose this is a first wave, ये फर्स्ट वेव है और ये कौन सी है आपकी? सेकेंड वेव. दिस इज y1 और ये आपकी जा रही है y2.
अब आपकी रिजल्टेंट वेव क्या बनेगी आफ्टर द सुपरपोजिशन? तो इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इट इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन. सो सी द नेगेटिव डायरेक्शन इज y इक्वल टू y1 माइनस ऑफ y2 हुज एम्पलीट्यूड इज मोर सेकेंड वेव. तो ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. दिस इज y इज इक्वल टू y1 माइनस y2. दिस इज इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये आपका क्या है? एम्पलीट्यूड इज मोर, राइट? सपोज इफ y1 इक्वल टू y2 and crest is falling on trough. If y1 equal to y2 and crest is falling on trough, like in this way, amplitudes are same y1 and this is also y1. अब नई वेव क्या बनेगी आपकी? This is completely a स्टेशनरी वेव. ये बन जाएगी आपकी स्टेशनरी वेव. क्या बनेगी? क्योंकि नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू y1 माइनस y1. दिस इज 0. तो आपकी स्टेशनरी वेव. अभी हम डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स में ये आपकी कौन सी वेव बनी. रिजल्टेंट इज 0 हेयर द रिजल्टेंट इज 0. तो अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहें तो क्या लिखोगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल according to this principle, if two or more than two waves passes through a medium, then the resultant wave having the amplitude as the vector sum of displacement due to individual waves. आपका इंडिविजुअल ड्यू टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल वेव. जैसे अभी हमने अगर ये ऊपर था पॉजिटिव और क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा था तो हमने क्या किया? वन इज प्लस एंड सेकेंड इज नेगेटिव. तो आपने इसको माइनस किया. और अगर क्रेस्ट पे फॉल कर रहा है यू हैव सिंपली एड दिस. सो आफ्टर दिस आई हैव टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. एप्लीकेशंस आर स्टैंडिंग वेव्स. एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. क्या है एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? फर्स्ट इज स्टैंडिंग वेव्स. दूसरा है बीट्स. ये दो टॉपिक आपके सिलेबस में है, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स, राइट? ये हम और इंटरफेरेंस आपका नेक्स्ट ईयर 12th क्लास में है. दैट वी विल डिस्कस इन 12th क्लास. ओके, थैंक यू.